नमस्कार। आज हम लोगों की चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने जा रही है, जो कि बिहार के छवि निर्माण और भाषा के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार में कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं? क्या उन भाषाओं को बोली का स्तर दिया जा सकता है, लेवल दिया जा सकता है? बोली और भाषा में क्या एक संबंध है, आपसी संबंध है? इन विषयों को लेकर के और जिनकी भाषाओं की राजनीति के को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान राजेश कुमार जी जो कि आईआईटी मद्रास में हैं, आज हम लोगों के बीच में अपने विचार रखेंगे और हम लोग उनको सुनेंगे, चर्चा करेंगे। पर उसके पहले मैं अनुरोध करता हूँ प्रोफ़ेसर श्रीश चौधरी को कि वो 2 शब्द कम से कम या थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन राजेश जी के बारे में और लोगों को दें। हमने तो थोड़ा सुना हुआ है उनसे, लेकिन श्रीश चौधरी जी, आपसे निवेदन है कि राजेश जी के बारे में 2 शब्द बताएँ। श्रीश चौधरी जी। हाँ, राजेश जी के बारे में ये मैं दूसरी बार बोलूंगा। एक बार मैंने कहा था 2011 ईस्वी में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को कि इनका एक ही डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो बिहार से है। अगर आपको वह डिस्क्वालिफिकेशन लगता है तो बाकी तो क्वालिफिकेशन ही है। तो मुझे 2 खंडों में इनका जो इंट्रोडक्शन अगले 60 सेकंड में देंगे या 90 सेकंड में देंगे, तो उसमें 30 सेकंड वाले बताएंगे कि राजेश जी कोट अनकोट बायोलॉजिकली ये जो गोपालगंज से किशनगंज आप कहते हैं, उसी उत्तर बिहार में पिंडारुच के उत्तर पश्चिम मोहनपुर गांव है, अहिल्या स्थान के बगल में। तो वहीं के इनके पिताजी निवासी हैं। ये कहाँ के निवासी है राजेश जी कहते हैं, मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि मैं दरभंगा का हूँ कि दिल्ली का हूँ कि इलिनॉय का हूँ कि अब मद्रास का हूँ। लेकिन गांव के कल्चर से बहुत परिचित भी नहीं है। एक दिन इनके चाचा जी की आटा चक्की चलती है, तो वहां पर चाचा जी ने बैठाया। जितने लोगों ने गेहूं पिसाया उसमें कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिए, सबका इन्होंने पीस दिया। चाचा ने कहा कि भैया तुम दूसरे दिन से मत आया करो। तो तुम छोड़ दो। हुँ। आज राजेश जी अपने स्टैंडर्ड से बड़ा वेल ड्रेस्ड है। अक्सर हाँ पटना उटला में तो इनको बस कंडक्टर समझ लेता था। और तारीफ की बात यह है कि राजेश जी उसकी बात काटते भी नहीं थे। अब बस कंडक्टर समझता है तो समझो, क्या फर्क पड़ता है। तो कई कहानियां हैं इनकी, लेकिन जो उल्लेखनीय विषय है वह है कि हम लोग जैसे 2 आईआईटी 3 आईआईटी में इंटरव्यू दिए, एक में हो गया तो पार्क कर गए। राजेश जी ने जितना आईआईटी में गए सब में इनका हो गया। 1 वर्ष कानपुर, 3 वर्ष पटना, और अब पिछले 10 वर्षों से ये मद्रास में है। याद नहीं है मुझे ठीक से कि कब इन्होंने पीएचडी किया, लेकिन इनका सीवी मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक मेरे अग्रज प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे भेजा था। तो मैं समझता था कि दिल्ली पंजाब का कोई लड़का है। तो अमेरिका में तो कई तरह के फर्स्ट होते हैं। एक फर्स्ट इनको भी मिला हुआ है कि उस बरस जितने ह्यूमैनिटीज में डिसर्टेशन हुए पूरी अमेरिका में, जी, इनको बेस्ट डिसर्टेशन अवार्ड अपने बैच का अच्छा। मिला हुआ था। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, जी, जी। हाँ। और उसके बाद इन्होंने 7-8 वर्षों तक अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में काम किया, जहाँ पर कि एक ज़माने में आइंस्टाइन हुआ करते थे। या हमारे अब मतलब मैं तो अंग्रेजी के दृष्टिकोण से कहूँगा, तो वहाँ पर सीडी नरसिम्हैया प्रोफेसर थे। तो वहाँ भी इन्होंने काम किया, लेकिन इनके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने लगा। तो भारत में जो कम बच्चे करते हैं, मैं यहाँ सबों की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ पब्लिकली, कुछ और लोग हैं जो करते हैं, अपने परिवार माता पिता के लिए कैरियर में कुछ त्याग करते हैं। तो राजेश जी भी भारत चले आए। पहले कानपुर रहे, फिर पटना रहे, फिर आईआईटी मद्रास का भाग्य अच्छा था। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को जब पता चला कि यह एप्लीकेंट है, तो 2008 में इनका इंटरव्यू इशू करवाया। अरे क्या बात! कारण क्या है वो बताते हैं। आजकल पहले क्या था, ट्रेडिशनल जो लिंग्विस्टिक्स होता था वो एक छोटे से एरिया में काम करता था।
या तो आप टाइपोलॉजी में हैं, या सिंटैक्स में है, या मॉर्फोलॉजी फोनोलॉजी, एक छोटे से विभाग में करते हैं। लेकिन नए जो आयाम आए, अब कंप्यूटर से भाषा को कैसे आप, कंप्यूटर को वह समझ कैसे आएगी कि भाषा समझ जाए, मनुष्य एक साथ 5 भाषाएं कैसे सीख लेता है, कैसे मैनेज करता है, भारत में सभी लोग करते हैं। तो राजेश जी ने ये जो क्रॉस कटिंग एरियाज है उसमें काफी काम किया है, गाइड किया है, पब्लिश किया है। कई यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में आज भी हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की विजिटिंग फैकल्टी बहुत दिनों तक रहे, और जगह रहे। अभी इन्होंने पाणिनियन ग्रामर पर एक इतना अच्छा वर्कशॉप कराया कि आईआईटी मद्रास के लोगों ने, डायरेक्टर वायरेक्टर सब ने कहा कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। कई क्रॉस सेक्शंस आए स्कॉलर्स के, अच्छा डिस्कशन हुआ। तो इनके पास अपना यूजुअल जो पब्लिकेशन होता है, प्रोफेसर का पेपर भी है, किताबें हैं, उनकी चर्चा क्या करें। वो चर्चा मैं उस दिन करूंगा जिस दिन इनकी कृपा से भारत की सभी गांवों में बोली जाने वाली छोटी छोटी भाषाओं में भी ऐसा हो जाए कि हम जिस भाषा में लिखे चाहे लिखे, समझने वाला अपनी भाषा में समझ जाए। या सारे बच्चे ऐसा व्याकरण बने, इस तरह से रचना हो कि सारे बच्चे जो भाषा सीखना चाहें ढंग से सीख लें। तो राजेश जी ने मल्टीलिंगुअल सिंटैक्स, मल्टीलिंगुअलिज्म, लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज टाइपोलॉजी और सिंटैक्स में इनका मेन काम है जो ये कह रहे थे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को आनंद आएगा। इनको बोलने में विट, ह्यूमर और सिंप्लिसिटी बहुत है। मैं इनको पहले नहीं पहचानता था। जब ये आईआईटी में इनका एप्लीकेशन रमाकांत अग्निहोत्री ने भेजा तो मैंने देखा, तो मैं 2-3 बातों से बड़ा इंप्रेस्ड हुआ। बेस्ट डिसर्टेशन है, इतनी आईआईटी में काम कर चुका है, ऐसा पब्लिकेशन है, आयु बहुत कम है। पढ़ाई इनकी सीएम कॉलेज दरभंगा में हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में बहुत दिनों तक रहे, और वैसे आदमी के साथ रहे जो जैसे थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में चॉम्स्की हैं, तो वैसे रीजनल स्टडीज में एक प्रोफेसर ब्रज कचरू हुआ करते थे। अभी कुछ ही दिन पहले देहांत हो गया उनका। वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट इन लिबरल आर्ट्स थे। अब बहुत ही खुददार आदमी, मतलब हिंदुस्तानी है ये, वो छाती पर लिख कर चला करते थे। तो उस तरह के लोगों के साथ इन्होंने काम किया है। तो मुझे आशा है कि राजेश जी जो भी बताएंगे वो रोचक होगा, और शायद कंट्रोवर्शियल तो होगा ही। सेमिनार का मजा भी तभी है। बिल्कुल। तो थैंक यू, आपने प्रदीप जी मुझे अवसर दिया इनके बारे में बोलने का। मेरी पत्नी अभी देखती तो आश्चर्य में पड़ जाती, पहचान ही नहीं पाती, इतना वेल ड्रेस तो कभी रहे ही नहीं है। तो राजेश जी प्लीज। थैंक यू सर। धन्यवाद श्री सर। और अब हम रिक्वेस्ट करते हैं राजेश जी से कि आपका समय, आपका फ्लोर है, आप जितना चाहें, जिस तरह से चाहें अपनी बातों को रखें। स्वागत है। Thank you, Pradeep ji, first of all, for inviting me to this August meeting. I have attended several talks on this platform, benefited a lot from many of them, all of them, and I am thrilled and genuinely privileged to be one of the speakers in this series. Thank you, sir, Professor Chaudhary. मैंने बहुत जगह बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ कहा है। ये परंपरा होती है, लोग किसी टॉक के पहले स्पीकर के बारे में कुछ बताते हैं। प्रोफेसर चौधरी ने जो कहा, ये सिंपली जेनरस, और मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो ये अभिभूत हूँ, अनुग्रहित हूँ। थैंक यू सर। मेरा स्लाइड आपके स्क्रीन पर होगा, देख सकते हैं आप। बस मैं इतना ही मैंने किया है अभी तक। आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा तो डिस्कशन का मैटर होता है। वो भी समय के साथ हुआ है, इसमें मेरा कुछ बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अब जो मैं इस सेमिनार में मैंने जो सब्जेक्ट टॉपिक दिया था, ये था, अचानक से मेरे दिमाग में जो आया मैंने बताया था। ये बहुत अलग नहीं है, लेकिन एक्चुअली होना ये चाहिए था। ये मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। मेनली द क्वेश्चन ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, एंड आई विल ट्राई टू लोकेट दिस in the context of languages of Bihar, in the context of
society, a little bit of history, geography, and how can we not talk about politics? मेरा मानना है कि लैंग्वेज एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और एज ए लिंग्विस्ट जब हम लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं तो वी लुक एट लैंग्वेज एज ए साइंटिफिक एंटिटी in the investigation of a structure or other aspects of language. When things become emotional or rather too political, they cease to remain scientific. But crossing or pushing the threshold a little ahead, I am to 45 minutes of time, and I do want to leave a lot of time for discussions, conversations after this to listen to your comments. And second footnote that I want to add is I have tried to make it semi-academic in nature. If people are interested in finding out references, I'll bring them. They are all ready with me. But I have tried to make it semi-academic for discussions. So when we talk about identity, and this is where I want to spend 2 minutes of time. Please mute your Shri sir, म्यूट कर लीजिए. चलो. Okay, so here is how I want to present the question of identity. There are multiple markers of identity, and I'm oversimplifying this discussion. But broadly we can look at two types. One is areal or geographical identity, which means when we identify people with areas or geographical markers, like when we say Indian or American, British, Canadian, Australian, African. What do these terms tell us about the identity of the referent? That's what we mean by geographical or areal identity. Then there are the other way to look at it is linguistic identity, which is, of course, identifying referents with their languages that they speak. So, and I have purposely picked these 4 terms when we say Japanese, Chinese, German, or English. These are, of course, linguistic identity of the speakers of these languages, but in particular, all of these 4 are also or could be markers of areal identity. People of Japan, irrespective of what they speak, could also be called Japanese. And we will see the relevance of this discussion when we move further. At the end of this 2-way broad distinction, I want to put it for your consideration that one of the underlying currents in everything that I am going to talk about is the idea that language could be a stronger marker of identity than religion. Being careful, I have written at times, but I am certain that it happens all the time. Which brings us to the point that area or language are not the only markers of identity. There could be various types of markers of identity. Just what comes out of this statement is religion could be another marker of identity. At the same time, we must add a note that these markers like area, language, religion,
do not apply in isolation. People may cut across these things, and therefore it becomes the entire question of identity becomes a very complex construct in understanding humans and societies. Usually we don't need, to this audience, we don't need this kind of map, but nonetheless it helps to have a picture in front of us. This is what India looks like. This map tells you, this is the recent map, and this map tells you this is different states of the Union is depicted here. I mentioned for this audience, we don't need this map because anytime this is ready in our mind. So it won't be difficult for us, but nonetheless, I'll bring it back time to time in the discussions. एक छोटा सा परिचय मैं इंडिया में लैंग्वेजेस के बारे में देना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं. According to an estimate, roughly 6,500 languages are spoken across the world. 6,000 or 600? 6,500 languages are spoken across the world. Oh. However, nobody knows the exact number of languages, and there is no list available anywhere, even as we speak. There is no list available that these many languages are spoken across the world. There are reasons for that. It's not a matter of criticism that we don't have the list available. If time permits, we will discuss. Language is a fluid entity. Sounds little contradictory. We are talking about numbers of languages. At the same time, we are saying, I am saying language is fluid entity. It flows from one to the other, and at times it becomes hard to count. And definitely it becomes easier to understand. Languages do not have hard boundaries between them. We don't know where language A stops and language B begins. There are several convergence areas where multiple languages are spoken. Multiple languages are spoken across societies. These are the generic things that I'll keep mentioning. All societies are multilingual in nature. All humans are multilingual in nature. Depends on how we define multilingualism. All languages are languages. The term dialect is loaded term. Nonetheless, we still make the distinction between language and dialect using these terms. But for technical purposes, or for that matter, any purposes, all languages are languages. So coming back to Indian areas, India speaks 4 languages from 4 major language families. Now it will be fair to say 5, and I'll mention that. So these are the language families spoken in, these are the broader families of languages, and all languages spoken in India fall in these categories. They are Indo-Aryan languages, Dravidian languages, Austroasiatic, which are also known as Munda languages, and Tibeto-Burman. To give you a broader picture of this classification of these 4 families, if you look at this map, if you look at this map, the entire northeast of India, that is Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland, the languages spoken in those areas are called Tibeto-Burman languages. It's a technical name. It has very little to do with Tibet or Burma, but it's the family is named Tibeto-Burman. It has its own history. Languages spoken in the major part of the Indian peninsula, like beginning from Jammu and Kashmir all the way to Maharashtra, Chhattisgarh and Odisha, this part, they are part of Indo-Aryan family of languages. And as I said, I am making broader divisions.
Languages spoken in Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala are called Dravidian languages. And a small group of languages, which are called Austroasiatic languages, they are spoken in parts of Jharkhand, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh. In this area, sometimes they are called Munda languages or Austroasiatic languages for broader understanding. There is one more family of language which has been discussed in recent literature. They are called Andamani group of languages, which are spoken in Andaman Nicobar Islands. So just to give you an idea, there are roughly identifiable 100 plus languages spoken in different islands in Indian Andaman and Nicobar Islands. 200 plus languages are spoken in northeastern part of India. And we will talk about other parts, other languages shortly. So if you look at the number of languages, some estimate says it's 1,670 languages in India. Grierson's Linguistic Survey of India, which is one of the monumental work on languages in India. Grierson was a trained anthropologist, a British civil servant. Over a period of 30 years in 18 volumes of work have given, the entire team has given an account of 179 languages and 544 dialects. A recent linguistic survey, which is known as People's Linguistic Survey of India, led by G.N. Devi and his team, comes up with 750 languages and a list of huge number of languages which we are going to lose very soon. They call it endangered languages. If we look at official status, official purpose, official documents, we see 22 languages listed in the 8th schedule of the Constitution of India. Probably Indian Constitution is the only constitution of its type which talks about language, which discusses language. And these are the names of languages listed in Constitution of India, which is 8th schedule. They are Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Meitei, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu, and Urdu. Please look at this list carefully. You can look at this list later as well. It's very interesting list. And to say the least, it's a political list. It has technical meaning, but it's a political list. Technical meaning, all these languages are considered official languages of India, in which, according to the discussions in Constituent Assembly, Hindi happens to be the first official language. And I have put them in alphabetical order. But the Constitution does not put these languages in alphabetical order. Neither does it put a number in front of them. So the care that has been taken in Constitution that they are listed in the order they were included in the 8th schedule. Not according to their alphabetical listing, or they don't put number first, second, third, or fourth. They don't want to give any status to them. The second interesting part is there are some languages which are spoken by, there is no parity in this list. Some languages are spoken by a huge number of people, and some languages are spoken by a smaller number of people. There are agitations, struggles for multiple languages to be put in this list, which is a different story altogether. I have listed Dogri, Nepali, Konkani. I put them in different color. Sindhi. These are spoken by very few people. But Maithili has been included in this list recently. There has been other inclusion after Maithili, but Maithili has been included recently, which is spoken by large number of people.
So that's a discussion, overall discussion on languages of India. Like I mentioned before, I repeat it again. We don't know the exact number of languages. We don't know how many languages are really spoken across the country or across the world, which is, as a linguist, I understand it's not a surprising thing, but nonetheless, it's a notable fact. Now, when we look at the map of India, and in terms of languages, these are the languages that we hear, broadly spoken languages. If you ask somebody, give me some names of languages in India, these are the names that people will give you. We don't, out of 1,600 or 750, if you start counting, we have to stop after 20, because we will have to struggle finding names after 20 or 25. But these are the broadly spoken languages in the country. Like I said, commonly spoken languages. If you go into little more detail, these are the languages that we find. And I do want your attention for a moment on these languages. In this map, they are not according to states. So you can look at languages like Mizo, Thado, Manipuri, and it's difficult to read, but Karbi, Khasi, Garo, Bodo, Adi, and lot many which are not even in this list. And then you can see other languages in Rajasthan area, Madhya Pradesh area, Uttar Pradesh, Bihar, and so on. We don't see much changes in this picture in Karnataka. This is an older map. So Telugu is listed covering both Andhra Pradesh and Telangana and Tamil Nadu, Tamil in Tamil Nadu and Malayalam. Now, when we'll come back to the larger picture of India in a moment, but I specifically want to bring all these discussions in the context of Bihar, because the moment we start looking at this picture, things become very, very different, to say the least. And I'll elaborate on what I mean by different. बहुत ही आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में बात करें. इसमें on this slide, I have tried to put few things which are not surprising or new for any audience. Nonetheless, it helps to understand looking at certain facts. So if we try to understand Bihar, also for the audience who may not be familiar with many things in and or about Bihar, these are some of the things that we can say. It's a state in the Middle East of India, the 12th largest state with an area in terms of area, 3rd largest state by population, Uttar Pradesh to its west, Nepal to the north, the northern part of West Bengal to the east, and Jharkhand in the south. And then you can look at other things, that it's split. The plains of Bihar is split by Ganga, which flows from west to east. And there are broadly 3 major regions. They are Magad, Mithila, and Bhojpur. And we can talk more about it. And I don't want to gloss over it. These are the factual descriptions of Bihar, in the sense that in the ancient India, the area that is now known as Bihar was considered a center of power, learning, and culture. These are not vacuous terms. They can be substantiated with a large bulk of evidence. We will go through some of them.
Magad is known as one of the first empire, which is known as Mauryan dynasty or Magad Empire, and its birthplace of Buddhism, and so on. We know about Mithila. This has been the kingdom of Videha. Most interesting part, not most interesting part, but there are many interesting things. But one of the interesting things that I want to draw your attention to is the place which is synonymous with the term mother of democracy is located in Bihar, even in modern Bihar. And it's a very, in ancient time, it was a very small place for which we know the whole country as a mother of democracy. People who go into the depth of the study of history would know, or would have looked at these things in greater details, that Bajji Janapad, we have so many kingdoms in the country, so many small and big rulers existed in the country, great kings. As far as my understanding goes, there is only one area which is known as Bajji Janapad. Not many kingdoms or areas were identified with Janapad. And to be precise, the reason was it was called Janapad because the people of Bajji area elected their rulers. Whatever they were called, they elected their rulers, and they were not part of any, they did not form any dynasty. That was the reason for their weakness as well. Probably that was the reason for their decay as well. Nonetheless, they preferred this mode of governance. And this is, in modern time, if we locate, it's part of Vaishali on the other side of Ganga. And that is the area why the entire Indian subcontinent is known as birthplace of democracy. So that's on one part. Look at this. This is, I'll talk a little bit more about it, but this is the modern map of Bihar with its districts. Like I said, we don't need elaborations on it for this audience, but this gives us, still looking at this gives us a sense of which place falls in which part of the state. We also need to keep in mind that probably it is one of the most dense locality of the world. May not be factually correct, but it won't be second to many. The three areas that I mentioned before in Mithila, Magad, and Bhojpur, the languages spoken in these areas are called Maithili, Magahi, and Bhojpuri, in whichever order we may like to put them. These are three major languages of Bihar. This is how Mauryan Empire looked like. This was the spread of Mauryan Empire. Don't want to make it too light or too serious. Rulers were in touch with their entire kingdom, even without any sort of technology that we have at our disposal in modern time. No emails, no computers. My layman's understanding is they were in very good terms with Cholas and Pandyas. Therefore, they didn't go that far. And also, probably they didn't have good navy. Otherwise, they could have gone all the way to Australia. Not sure about these things, so they don't want to make trivial comments about it.
But that's the spread of modern empire. There are reasons why I'm talking about these things. When you start looking at some of the facts about Bihar, then the reasons become apparent. And if they don't, I'll bring your attention to that. So some of the facts, further things about Bihar, I already talked about 3 languages. Here, I am mentioning 4. I'm bringing Anga region, where Angika is the language. Mauryan Empire, beginning with Chandragupta Maurya. Chanakya, Vishnugupta is the founder of that, founder or architect of that empire. That's part of history. One of the greatest rulers of that dynasty, Ashoka. The story and history of Patliputra, modern Patna, we are familiar with these parts. When I was talking about science, culture, and even today, there is a place near Patna which is known as Taregana. Was the place of laboratory for Aryabhatta, where study from शून्य, ऐसे कहते हैं हिंदी में, शून्य से अनंत तक की स्टडी हुई थी वहां पर. और एक्चुअली उसका नाम वो ऐसे जाना गया होगा कि तारे की गणना से ये टर्म बना होगा, तरेगना. But that was the place of laboratory where Aryabhatta studied mathematics and astronomy. विष्णुगुप्त, चाणक्य जिनको हम जानते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन करने की यह है कि probably the first writing on political economy was done by Vishnugupta, which is famous as Arthashastra. 10th and the last guru of Sikhs, Guru Gobind Singh, was born in Patna. Gautam Buddha attained enlightenment in Bodh Gaya, the current Bodh Gaya. Bardhaman, Mahavir, Tirthankar, the last Tirthankar of Jainism, was born in Vaishali around 6th century BC, and so on. These are the facts that I just presented are not contested facts. They are just simple information. I want to turn your attention a little bit towards some of the legends and facts. I would like to believe them as facts, but because this could be contested, some people may term them as mythology. Nonetheless, they are important to pay attention to. We know about Shringi Muni, who performed Putra Kamishti Yagya for Dasarath. We know this place, the ashram falls in Darbhanga district. I'm not sure if it is Madhubani or Darbhanga, but Singhiya is the place which is identified as the ashram for Shringi Muni. Maharshi Gautam, Sita, Ahilya, Yagyavalk, these, for variety of reasons, they could be contested, but these legends are identified with the geography, the land of Bihar. Kalidas, author of Meghadutam, Raghuvansam, Shakuntalam, Kumar Sambhavam, was born in this land. I talked about Aryabhatta, who in his study is responsible for our understanding from 0 to infinity, which is known as Sunya Se Anantak. From not in any particular order, but if you look at these names, they are astonishing in their presence. I have already mentioned many, but worth mentioning here is Vidyapati. Vidyapati
a Mathili poet, probably the greatest Mathili poet till the date, born in Bisfi, was contemporary of Geoffrey Chaucer. I feel like I'm trivializing Vidyapati by saying contemporary of Geoffrey Chaucer, but nonetheless, just I'm using this term to give sense of time. And this will be relevant when we talk about Mathili and Hindi in a minute. The rest of the names we are all familiar with. Rajendra Prasad, Jayaprakash Narayan with Sampurna Kranti, Ramdhari Singh Dinkar. I mean, if one doesn't get time to read the entire diction of Dinkar, if we just look at Rashmi Rathi, it's not just about Karn. It's a philosophical diction, and some of the lines are monumental. Tejasvi samman khojte nahi gotra batla ke, and so on. If you look at lines of Vidyapati, they have become metaphorical. They are more famous than the name of Vidyapati himself. One of the things in my early days that I studied by Vidyapati, I still remember the Ganga Stuti, Bar Sukh Sar Pavela Tu Dire. I may not be pronouncing it properly, but I hope you understand. Bar Sukh Sar Pavela Tu Dire, Charait Nikat Nayan Bahe Nire, Karajori Binemo Bimal Tarange, Puni Darasan Hoye Punamati Gange. Seems like somebody wrote the way we understand Ganga and Mathili, seems like somebody wrote it yesterday. And rest of the names are for just for the reference. We know about Nalanda Vishwavidyapith and its library. It attracted scholars from Iran, Korea, Japan, Persia, Greece, China, and many other places. It is said that the library was set on fire by army of Bakhtiyar Khilji and under his command, and probably that was on fire for many months. I didn't have authentic information on that. So so this is the I don't want to make controversial remarks, but we know that we have a place called Simri Bakhtiyarpur even today, and that is named after Bakhtiyar Khilji. Now, here we start the context. I give you the context why I talked about it. My understanding of a study of Bihar, or just an attempt to understand Bihar, becomes problematized here onwards. That the landscape which is known for all these things today is known for anything but these things. I don't mean to be sympathetic or empathetic about it, but just want to present this to you as facts. We can discuss this when we talk about it. I don't understand the reasons for that, but I feel, and in my study, I am trying to correlate it in the questions of language. And that's the main contention that I wanted to share with you. Broadly, what I have to say, I can discuss in 5 minutes. So how do we start looking at this? So I said one proposition, that I have given you the introduction of Bihar. It takes me longer time to talk about these things when I talk to unfamiliar audience, but to you, it is not very difficult to go through this. But here is the point, that in modern time as we speak, this landscape is known for anything but these things. It's our glorious history, we understand that, but don't understand what happened afterwards in modern time. One of the examples that I can give you is in my study of language.
all we can have, as I mentioned, several identities in the beginning and different types of identities. All markers can be converted into an adjective. All places can be converted into adjectives like Chinese, Japanese, and so on. But probably, and many of you would agree with me, that this term, the derived adjective from Bihari, is synonymous as a gali, a curse. Not sure how many of us feel elated or elevated or good when somebody uses this term. Again, to this audience, I don't need to describe this any further. In fact, it is also, conversely, it is also true that many people do not find themselves comfortable revealing their identity as Bihari. We don't need to. I have heard, just to give you an anecdote, I have heard a very famous economist, Professor Bhagwati, in our department, at the Department of Asian Studies at University of Texas. He mentioned a very, his remark was very revealing. He was talking about poverty in India. That was not an economics gathering, it was a general audience. And in response to one of the questions, he said, we don't need complex statistical tool to understand poverty of India. You just need to keep your eyes open and walk on the streets. You would understand what poverty means. Maybe you will get different interpretations and definitions of poverty as well. So to this audience, I don't need to describe what I am talking about. Again, we don't understand why only this term has led to this consequence. And it's equally true that many, and this is not, therefore I mentioned Professor Bhagwati, this is not a matter of research. I'm sure we know that many people do not want to be even identified as Bihari. When we start looking at, we can agree, disagree about these things, but we can talk about this. I'll come back to this part again about Bihari when I bring in the questions of language and why I think it has become this way. And then I would like to hear from you. But before that, I want to talk about one more significant thing, which I think has answers in the questions of language and identity. We are familiar with the term Bengal presidency. And we know that until recently, when Bengal presidency got divided into Bengal, Odisha, and Bihar, the whole area was part of Bengal presidency. This division in this I call the division in the East. The contexts are different, so I'm not mixing them together. And there was another division on the western side, which was the division of Punjab. Correct me if I am wrong, but I think the division in the East was one of the most peaceful division in the history of human race, and division in the West was one of the bloodiest division in the history of human race. Now, why we need to understand, and how we need to understand that. And the story of mineral-rich Jharkhand, which was once, at that time, the division of Bihar, Odisha, and Bengal, was part of Bihar. Now, we know about these things, but I want to draw your attention to the following. We know Jharkhand, even today, is one of the most mineral-rich area in the world. But as an outcome of this peaceful division, Bengal did not want Jharkhand and the areas of Jharkhand to be part of Bengal. What we knew at that point as Bengal, which further got divided into East Bengal, East Pakistan, then Bangladesh, and the current West Bengal. We are only considered about West Bengal now. Bengal at that time had absolutely no claim on that area.
Neither did Orissa. If we look at the geography, I think the place is Baripada or something, which is close to Jamshedpur. There was, I'm not familiar with the intricate discussions, but probably there was no discussion on including even Jamshedpur in Orissa. My explanation to that is we know the significance of Jamshedpur, Tatanagar, and Jharkhand, the entire in modern time. Why am I bringing in this question of Jharkhand or southern Bihar as it was known at that time? My understanding of this division is this was peaceful because there was no demand of this division. And Bengal and Orissa did not want to have land under their territory beyond the point Bengali or Odia were not spoken. The places where Bengali and Odia stopped, as I mentioned in the beginning, languages do not have rigid boundaries. But still we can identify certain places with the names of languages. So beyond Asansol, there was, I'm just mentioning one place, there was absolutely no claim on the territory by what was called Bengal at that time, and beyond Baripada, including at the cost of leaving Jamshedpur, probably there was nothing to claim Jamshedpur as part of it. Which is, and it may sound cynical to many, and at the cost of being a cynic, I want to put this for your consideration, that whatever was left after carving Orissa out of it or Bengal out of it was called Bihar. There was no demand for separation of Bihar. Now, that creates this landscape as an artificial area. And Bihar does not happen to be the only one of its type. If you look at it, we don't need to be too careful about it. Even Uttar Pradesh seems to be of that type. And it will become clearer when I look at some more parts. And it's not true. Things are worse in other parts of the country, other parts of the world. There is a province in Pakistan, the current control of current Pakistani regime. It's called if I am not wrong, it's called NFWP. Just a moment. NFWP, Northwestern Frontier Province. At times it's the identity of the people, the bigger identity in terms of linguistic identity of that landscape is Pashto. But people of that landscape are not even allowed to rename their area, their state, according to their identity. It's called Northwestern Frontier Province. Sounds very bad, but I'm not trying to draw any parallel between India and Pakistan, but the story of Uttar Pradesh or Madhya Pradesh is not very different from that. What does Uttar Pradesh mean? The story is almost similar to that of Bihar. Now, I'll connect it to make bigger sense in that context. This is where we see. Now, I go back to the map of India one more time. The states of India in particular. We know, and this is a factual thing, that the Constituent Assembly of India took more than 2.5 years to frame, to deliberate upon Constitution. And one of the most discussed topic in the Constituent Assembly was the question of language. There were agreements, disagreements. That's a matter of the Constituent Assembly debate is a matter of a different discussion altogether. But results are significant. Most of the states were identified with their languages. So
Broadly speaking, Kashmiri as Kashmir, Punjabi, because Punjabi was the dominant language in that area, it was known as Punjab. Gujarati for Gujarat, and likewise Marathi, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu, Odia, Bengali, Assamese, Mizo, Naga, and so on. These states, so at this point, I wanted to mention this in the beginning, but I moved ahead without mentioning it. I wanted to use the term asmita for identity. Because what I wanted to discuss and what I want to present to you, the term identity doesn't really cover that whole discussion. A loose translation of asmita may be identity, but it is way more than identity. So please keep that term in mind. So even from a very broader understanding of language, we know that our states are organized according to the languages, that is the larger language that are spoken in that area. Again, referring back to number of languages, we can count 10, 20, 25 languages that are broadly known, but we can't count more than 50 even with effort. And counting 1,600, we will have to look at a lot of documents and so on. So when we say Marathi is spoken in Maharashtra, we are glossing it over that there are so many other languages spoken in Maharashtra as well. But that landscape is known as Maharashtra because it is identified with Marathi as its language. And that is true for all the names that I have mentioned. Can go slowly and do the same exercise for all of them, but I'm pretty sure it makes sense. Karnataka is identified with Kannada, Malayalam in Kerala, Tamil in Tamil Nadu, Telugu in Andhra Pradesh, Odia in Odisha, West Bengali in West Bengal, Assamese in Assam. Now, my point is, these are not just the names of languages. These are names of the identity of speakers of these languages. They are also, these terms refer to what I say, asmita of the people of these areas, which is not true for the areas of Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, can include Uttarakhand, because when I say Uttar Pradesh, I mean Uttarakhand together without making it political, Haryana and Rajasthan. This, if at this point I can introduce the term, which is very well known, is Hindi heartland. This is, if you check it, this is the landscape that is known as Hindi heartland. Now, I'm not at all insinuating any conspiracy in that. I'm not trying to say this was part of a conspiracy that Hindi heartland were named with these names, which are not referring to the identity of the people, but it has consequences for sure that we need to be careful about. So going back to my point, I'll come back to this again, but let's look at here is what I want you to look at. I have a better map, but I can show. See, these are the maps of the different parts of Uttar Pradesh. On one side you have Awadh, on the other side you have the western part of Uttar Pradesh, which is probably known as Braj. Then we have Bundelkhand and what is known as Purvanchal is basically
Bhojpuri speaking area. It has a strange name. It is identified, even as a part, it is identified as Purvanchal. Because it's part of eastern part of Uttar Pradesh, makes sense. But this is Bhojpuri speaking area. So if you look at this area, the area in the red and green in a peripheral sense, red in the greater sense is known as Hindi heartland. My contention is to say that these places are not identified with their languages. And whether it is apparent elsewhere or not, it has consequences in Bihar for sure. And that's what I meant when I was talking about division of Bengal presidency. That and even in as part of several years later, as part of the discussions in Constituent Assembly, I have no evidence to claim anything beyond this. But actually, these places should have been named as Bundelkhand, Bhojpur, Mithila, Magadh, Awadh, and so on. There are much smaller states in India than these regions. What will be the consequence of that? There are two specific consequences of that. One is speakers of different languages in these areas will be identified with their languages. They can connect with their identity, asmita, the way Tamils connect with Tamil, or Malayalis connect with Malayalam, or Telugu, Kannada, and any other place, name any other place. The fact that the landscape of Bihar is not known as, so obviously there would have been a different boundary. Bhojpur would definitely cover Purvanchal and some parts of Bihar, but that is inconsequential in my understanding, because what has greater consequence is definitely the identity of the people. In a way, it sounds like people of this area is stripped of their identity in the name of Hindi heartland. And whatever is the consequence of that Hindi heartland, it has damaging impact for the people living in this area. There is a political connect to that. I'll come to that in a moment. This is in this map. I have names of languages, areas, and the gray part is known as Hindi heartland. So again, I'm not presenting Hindi as matter of conspiracy, but what Hindi has done as its consequence to the speakers of other languages in this area is what I am trying to underline. I have talked about this already, that Braj, Awadh, Bundelkhand. So if we look at Madhya Pradesh, like I said in the beginning, we can talk about northwestern frontier province of Pakistan, but what does Madhya Pradesh really mean as compared to Tamil Nadu or Andhra Pradesh or Bengal or Assam? The languages spoken, if you ask somebody what's the language spoken in Madhya Pradesh, one of the generic answer is Hindi. The languages spoken in this area, this is little blurred map, but I'll read it for you. I have a list for me. It's Malavi, Bundeli, Bagheli, Korku, Gondi, and so on. In the southern part, we have Marathi. Harauti is another language spoken in Madhya Pradesh, and so on. Harauti is also spoken in Rajasthan, as you know. I'll come to Rajasthan. I mentioned Grierson. Talking about Bihar, the first reference of the term Bihari, referring to languages, Bihari languages, comes in Linguistic Survey of India. Probably Grierson wanted to
coin a term for group of languages. But I still don't understand why it would be, why he would need to, when he was going into too technical details of different languages, why he would need to coin the term identifying the group. But the same is true for Haryana, Rajasthan, and so on. Rajasthani is not a language. Rajasthani is a group of languages where the languages are Shekhawati, Mewari, Mewati, Harauti, Wagadi, and several others. The languages in Haryana, we think, check around yourself, ask somebody, language of Haryana is Haryanvi. Again, this is the term for a group of languages. Names are Bagadi, Ahirwati, Deshavali, Bangru, Korvi, Ambalvi. These are some languages of these areas. At this point, I want to make a note or underline that Bagadi, Ahirwati, Deshavali, Bangru, Korvi, Ambalvi, these are not the dialects of Haryana. These are Mewari, Mewati, Marwari, Shekhawati, Wagadi. These are not the dialects of Rajasthani. These are languages. The reason why I'm trying to underline this point is, and again, no, the reason why I'm trying to underline this point is, if we understand it in these terms, then we have to understand Bundeli, Bagheli, Harauti, Orku as dialects of Hindi. And that is where what continues, we understand Bundeli, Brajbhasha, Awadhi, Bhojpuri, Maithili, Magahi as dialects of Hindi. The question that I have here on the screen for anyone is, we will go through some of these questions. But the main point that I am trying to make here is the languages that I have just named, like Maithili, Bhojpuri, Magahi, Awadhi, Bundeli, Braj, and other languages of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Haryana, these are not the dialects of Hindi. Because if we look at the total number of speakers of Hindi in India, speakers of these languages are counted as speakers of Hindi. How many people speak Hindi? That will be an interesting question to find, particularly in the context that how many people speak Hindi as their first language. And first language is a technical term which simply means the language that we grew up speaking. And even more interesting question will be, how many people speak only Hindi? And then mutual intelligence is not the question that we are discussing here. And then we know about the history of Hindi. Again, I am not going into the details of its history. Did it exist before the first half of the 18th century? Because the first known author in the literature and otherwise we know as Bhartendu Harishchandra. I talked about just one reference of Vidyapati, the contemporary of Geoffrey Chaucer. Somebody who writes poetry in Maithili in his time, can Maithili be the dialect of Hindi? Or is this the way to understand the language situation? The answer is clearly no. But unfortunately, it is counted, it is understood that way because this fictitious construction of Hindi heartland is what is responsible for this understanding of these ancient and languages which have their own history being painted as language, as dialects of Hindi. And there are more consequences of that. Am I talking about something? Is my argument against Hindi? The answer is clearly no. I'm not speaking against Hindi. I'm not saying Hindi is not an important language of India.
But if you look at the discussions of Hindi, Hindu, Hindustan, when we know, I have a specific reference point why I talked about Smita and identity. Look, if I tell you two terms, I'll come back to Hindi, Hindu, Hindustan in a minute. Oh, I'll conclude it in 5 minutes time, just for the record. So if I tell you two terms, Hindustan, and I say the another term, Hindustan, I hope the distinction in pronunciation is clear to people. Hindustan and Hindustan. The distinction between ta and tha, two simple sounds in these two terms, have serious social load on them. I'll elaborate that if somebody is interested in that. It can give you ideological understanding, political understanding of these terms. But so why I'm talking about that social load is we need to understand Hindi, Hindu, and Hindustan. If we look at it purely from language perspective, and linguistic understanding tells you Hindi and Hindu are two adjectives of what we know as Hindustan or Hindustan. So we are not talking against the term Hindi or whatever it refers to. It is also not an argument that why Hindi is the first official language of India. That's perfectly fine. Because if we look at Hindi, questions of Hindi and English, Hindi is the first official language of the Union. English happens to be the associate official language of the Union, not the second one. And not the second official language, the associate official language of the Union. And these languages are used in the functional domains. These are languages of education. To the best of understanding, Hindi could be a lingua franca, like English, for the speakers of different languages in the country, because it appears to be the case that Hindi is not the marker of identity for any speaker, for any group of people in any specific area of this land. I am not disputing this land either, because if we go back there is a mention of this land in Vishnu Puran, Uttaran Yatta Samudrasya Himadresya Chaiva Dakshinam Varsatad Bharatannam Bharati Tatra Santati. I'm not contesting the geography of India, the construction that is called India. I am not even contesting the name, whether it should be called India, Hindustan, Bharat. These are trivial political discussions. But in a serious sense, one needs to understand Hindi is not the marker of identity for any speaker, any group in India. It's a matter of investigation to find it out. Last point, or to conclude this point, what I want to say as conclusion is, it is this fictitious construction of Hindi heartland, which is problematic for languages, for why Uttar Pradesh, Bihar in particular, with Maithili, Bhojpuri, and Maghi. I mean, imagine the Maghi, which would have been the official language of Magadha Empire, which has had legends like Vishnugupta, Chandragupta, and Ashoka. Today we call Hindi, Maghi, as the dialect of Hindi, and I'm not being non-serious about it. A lot of people in serious sense consider Bhojpuri, Maghi, and Maithili as dialects of Hindi because of its mutual intelligibility. My non-serious remark is, as far as we understand, Ashoka had adopted Buddhism after Kalinga War and seeing killings and bloodbath. If linguistic identity is a serious thing, my hunch is, after hearing Maghi as the dialect of Hindi, Ashoka would probably go back and pull his sword once again. I rest my case here. Rest is for you to look at. And I hope I have done justice to the point that the question that I raised about why people do not like being called
Bihari, the answer to that question in this context is that the term Bihar does not hold the identity of the speakers of different languages people. Am I arguing in favor of smaller states or division of multiple states? The division is a divisive word. I would like to term it as reorganization. And political consequence of this is so revealing today is the demand of reconstruction of this Hindi heartland is in favor of people of this heartland, this area, because they will get their identity back. And politically, it is in favor of the people who are not part of this area, because as long as this fictitious construct exists, everybody else with their smita will be on the periphery, will not have the share that they would want in the union government in Delhi. I will be happy to elaborate on any part that I have mentioned, but broadly speaking, that's all I had to say. Don't want to conclude it again. Thank you so much for listening, and I will be happy to take questions or elaborate on any part. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक सवाल को रखा, और इसमें बिहार के अंदर जो एक बहस है मैथिली, भोजपुरी और मगही का, उससे ज्यादा बड़ा बहस जो पूरे राष्ट्र के स्तर पर हिंदी और बाकी भाषाओं के बीच में है, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर, उस सवाल को आपने उठाया है। ये फ्लोर ओपन है, जो कोई भी यदि सवाल पूछना चाहते हैं कुछ, तो अपने सवाल रख सकते हैं। स्क्रीन शेयर बंद। किसी का सवाल है? संजीव जी कुछ सवाल पूछेंगे? हेलो जी, संजीव जी। नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से राजेश जी ने बहुत सारी बातों को रखा है, और चूंकि इंडिया बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव कंट्री रहा है, तो इस कारण से इन सारे मुद्दों पर बहुत सारी बहस हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हर आदमी को इस बात पे चिंतन करना चाहिए। और जो बहुत सारी भाषा संबंधी समस्याएं रही हैं, उसको अगर राजेश जी का जो पूरा स्पीच है उसको ढंग से सुना जाए, तो बहुत सारी समस्याओं का इसमें समाधान भी दिखता है, और बहुत सारी शंकाओं को उन्होंने अच्छे ढंग से रखा है। बहुत सारी बातें मुझे भी पता, मैं भी लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सारी बातें पता नहीं थी, तो मेरे लिए तो बहुत ज्ञानवर्धक था। और हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। इसे कोई पॉलिटिकल रंग न दे करके भाषा और आइडेंटिटी के रूप में देखा जाए तो अच्छी बात होगी। मैं राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातों को उन्होंने रखा है। विद्या जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? विद्या झा जी। नहीं, काफी 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 अच्छी बातें कही गई। मैं तो जस्ट सारी बातों को सुन रहा था और मैंने इसे लाभ उठाया। मैं तो लिंग्विस्टिक्स का छात्र हूं नहीं, लेकिन समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्ति होने के नाते सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह रखी गई हैं, अच्छे पर्सपेक्टिव में। मैं स्पीकर को धन्यवाद देता हूं इसके लिए, और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार है आज हमारे साथ, रंजीत कुमार राम। रंजीत जी कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर रंजीत। डॉक्टर रेशमा तबस्सुम है, रेशमा जी कुछ बोलना चाहती हैं? Sir, Rajesh sir has said everything very elaborately, sir. So I'm
very much thankful. I gained much knowledge, and very thing became means many things became very clear, sir. So I'm very much thankful to you for organizing such thing and calling some eminent person you have joined in this Gyanotsava program. So I'm very much thankful, sir. I heard everything and means I enjoyed it. So means enjoyment in the sense that I gained much knowledge. Things became very much clear, sir. थैंक यू। देवानंद, कुछ आप बोलना चाहते हैं? नमस्ते सर। हाँ सर, कुछ ऐसे ही बोलना चाहूंगा। ये सर, आवाज सुनाई दे रही है सर मेरी? हाँ, बोलिए। हाँ सर। तो सर, 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही जो है भाषा का है, हिंदी हार्टलैंड जो बोला गया उसमें बहुत ही जोरों शोरों से रहा है। तो उसमें रीजनल लैंग्वेजेस भी हमने देखा कि इसी समय आने शुरू होते हैं। एक एक मिनट सर। हाँ, तो रीजनल लैंग्वेज भी इस समय आने शुरू होते हैं, और जो मैथिली या उसके अंदर का जो डिबेट है वो भी हम देखते हैं इसी समय शुरू होता है। अब पॉलिटिक्स की तो जो बात है उसमें मैं नहीं बोल रहा, ये मतलब कि उस टाइम के मैगजीन्स में भी और अन्य जगह डिबेट है। 61 का हो चाहे 1971 का जो सेंसस हो, तो सेंसस में ऐसा बहुत सारे इंटेलिजेंसिया ये ब्लेम करते हैं कि जो हिंदी भाषा का जो जो सर्वे करने जो जो आते हैं, तो उसमें भाषा कुछ और बोली जाती है, लिख कोई और ली जाती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लिखा हुआ है। तो जो सोर्सेज जो हम पढ़ रहे हैं उसके मेथड में भी हमें थोड़ा जानने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि उसके क्या है। फिर जो है सर्वे के दौरान जो है, जो बीच के जो होते हैं, जो किसी भाषा किसी क्षेत्र में जाते हैं, तो उसके बीच में जो व्यक्ति होते हैं जो उस लैंग्वेज को समझ के वो जो बोलते हैं, तो उस सारी चीजों को हमें देखने की जरूरत है। तो पॉलिटिक्स के साथ तो पूरी तरह से उसको, रीजनल पॉलिटिक्स के साथ भी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके साथ बहुत ही गहरे रूप से आवाज नहीं आ रही है। उससे पहले भी 2 कमेटी बनी थी जो स्टेट रीऑर्गन। हाँ, ठीक है, जा बोलिए। रही है सर आवाज? हाँ हाँ, आ हाँ, रही तो है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से पहले भी 2 कमेटी बनी थी, तो उसमें भी भाषा के आधार पर तो राज्य को देना मना कर दिया था। लेकिन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की कमेटी की रिपोर्ट भी बनी, तो मुझे लगता है कि उसको एक बार इस तरह से देखना चाहिए कि उन्होंने भी, दिक्कत ये होगी कि उन्होंने भी एक भाषा और एक राज्य की डिमांड को नहीं माना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में। थोड़ा उस तरीके से भी देखे जाने की जरूरत है, और इस तरीके से, और ये पॉलिटिक्स के साथ उसे देखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, तो वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं बोलना ठीक नहीं समझ रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, मतलब थैंक यू। ठीक है सर, वो ठीक। श्री सर, कुछ पूछना बोलना चाहेंगे? श्री सर। राजेश, हाँ, राजेश जी ने जो कहा है मैं उसी में थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा कि 1960 के जनगणना में जितने लोगों ने मैथिली, मगही, भोजपुरी इत्यादि का नाम दिया था, तो जनगणना के जो निदेशक थे उस समय के, निगम, ये तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो उन्होंने उसको उसी तरह से रिपोर्ट कर दिया। तो हिंदी देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा नहीं हो रही थी, वह प्रतिष्ठा बांग्ला और तेलुगु के बीच में बट रहा था, बट रही थी। तो फिर से रिपोर्ट को रिवाइज किया गया, रिवाइज्ड रिपोर्ट दिया गया। तब उसमें, जैसा राजेश जी ने कहा है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार, छत्तीसगढ़, इन सारी भाषाओं को हिंदी के अंदर ले लिया गया। तब हिंदी हो गई भारत की 40% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बाकी हो गई उपभाषा है। ये काफी विस्तार से लिखा हुआ है। एक हम लोग जानते हैं, जो भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं वे लोग जानते हैं, एक प्रोफेसर देवी प्रसन्न पटनायक हुआ करते थे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के निदेशक थे। वो 26 वर्ष की आयु में ही उनको काफी बड़ी प्रतिष्ठा मिली। उनको भारत सरकार ने CIIL का डायरेक्टर बनाया। उन्होंने हिंदी और गैर हिंदी भाषाओं के क्षेत्र में काफी कुछ काम किया है, बहुत कुछ किया है। तो उनका डिटेल्ड रिकॉर्डिंग उसमें दी हुई है, उसमें कोई कहीं पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद बोली, भाषा इत्यादि का जो वर्गीकरण गृह मंत्रालय करता है, वह उतना ही
ठीक है, जितना ये कहना कि गोरे जो हैं वो मनुष्य हैं, काले जो हैं वो थोड़ा उप मनुष्य हैं। राजेश जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से, संक्षेप में ही सही लेकिन काफी अच्छी तरह से समझाया है। इस तरह से हिमाचल का पहाड़ी, झारखंड का मुंडारी, कोई समानता नहीं है। झारखंड का मुंडारी राजेश जी ने जैसे बताया ऑस्ट्रो एशियाटिक में आता है। हिमाचल की पहाड़ी भाई अपनी उसकी अस्मिता वैसे ही है जैसे हिंदी मैथिली की है। आप लिखित साहित्य लें तब भी, अलिखित साहित्य लें तब भी। इस तरह से कहने की बात यह है कि इस तरह की ज्यादती एक शॉर्ट साइटेड, एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण से, यह किसी को मजबूत नहीं बनाती है। जेएनयू में जो लोग पढ़े हैं वो जानते होंगे, एक प्रोफेसर वीर भरत तलवार हुआ करते थे। तो वीर भरत तलवार आरंभिक के दिनों में हिमाचल झारखंड के जंगलों में नक्सली हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वो नक्सली नहीं रहे, वापस आ गए मेन स्ट्रीम में। और उन्होंने काफी काम किया भाषाओं के साथ, न्याय अन्याय पर। और उनकी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, हर किसी को जो इसमें रुचि रखते हो कि हिंदी का उत्थान और इसके लिए क्या झगड़ा झंझट हुआ है, उनकी पुस्तक का नाम है रस्सा कसी। बहुत ही अच्छी किताब है, आउट ऑफ प्रिंट है, शायद आपको मिले नहीं, लेकिन जो दिल्ली में है, जो बड़े पुस्तकालयों के नजदीक हैं, उनको वो मिल जाएगी। रस्साकसी में उन्होंने दिखाया है कि कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जरा सा पहले से सर सैयद अहमद, जिन्होंने अलीगढ़ का आंदोलन शुरू किया, उन्होंने कहा था कि हिंदी बाई लोगों की भाषा है, ये हिंदी बाजार की सिर्फ भाषा है। तो भारतेंदु ने कहा कि उर्दू बाई लोगों द्वारा बोली जाने वाली, वैश्याओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आप उठाकर देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के पहले अगर अवधी, ब्रज, इस तरह की भाषा को आप अपनी अस्मिता मान ले, जो राजेश जी कह रहे थे, जो मानने के कई भाषा वैज्ञानिक कारण है, उसका एक एक मैट्रिक्स होता है ये मान लेने का कि ये जेनेटिकली रिलेटेड है या नहीं, तो कहीं कुछ नहीं दिखता है सिवाय एक इसके राजनीतिक, उसमें राजनीतिक पूर्वाग्रह के, उसमें राजनीतिक पूर्वाग्रह को बल मिला जब गांधी जी उसमें आ गए। मैं गांधी जी को इस देश में गौतम बुद्ध शंकराचार्य के बाद सबसे बड़ा जोड़ने वाला आदमी मानता हूं, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि गांधी जी का एक पॉलिटिकल एजेंडा था। तो गांधी जी ने जब से इसमें जोर लगाना शुरू कर दिया कि हिंदी तो देश की गंगा है, बाकी सारी, तो या हिंदुस्तानी उन्होंने कहा, हिंदी नहीं कहा, ताकि वो उर्दू और हिंदी दोनों को ले आए। मालवीय जी वगैरह इससे सहमत नहीं थे, वो एक अलग काशी नागरी प्रचारणी सभा और नागपुर की राजनीति एक अलग कहानी है। लेकिन वापस अगर हम एक भाषा विज्ञान के विद्यार्थी की तरह देखते हैं तो हिंदी का भला, जैसा देवी प्रसन्न पटनायक कहते हैं कि देश का भला, हिंदी का भला एक ही चीज है। अगर हिंदी अपनी भूमिका संपर्क भाषा की तरह रखे तो देश का भी भला होगा, हिंदी का भी भला होगा, सबों का भला होगा। और जो स्थानीय स्तर पर भाषाएं हैं उनको पनपने फूलने दे, नहीं तो फिर अंग्रेजी से जो हिंदी का टक्कर है उसमें, मैं आपने कई लोगों ने इस सेमिनार में बैठे हुए भी कई लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, हिमाचल से लेकर केरल तक काम किया है। हम लोग यह जानते हैं कि सरकार और प्रशासन के बल पर कोई भी चीज बहुत दिनों तक नहीं चलती है। अंग्रेजी वैसे भी मार्केट फोर्सेस की वजह से अनस्टॉपेबल है, उसको रोक नहीं सकते। इंग्लिश इज, जैसे जैसे आपको इंग्लिश यहाँ पावर से आई, उसी तरह से इंग्लिश पावर से घर में भी घुस रही है, तो फिर रोकना हिंदी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा उसे। लेकिन ये रास्ता अगर चलते हैं, जैसा राजेश जी ने भी सजेस्ट किया, ताकि ये स्थानीय भाषाएं भी फले फूले। 8वीं अनुसूची में आपने नाम दे दिया, लेकिन इसको इनकरेज करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक जरा भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके शिक्षकों की बहाली नहीं कर रहे हैं, जहां तहां इसको काट रहे हैं, इसका व्यवहार नहीं होने दे रहे हैं, तो यह बहुत दूर जाने वाली नीति तब नहीं है। अंत में जैसा राजेश जी कह रहे थे, भाषाओं का अपना प्रवाह होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। जिस तरह से अंग्रेजी बढ़ रही है आर्थिक कारणों से और तकनीकी कारणों से, टेक्नोलॉजी की वजह से, अब गिनती की, मैं गांव में बैठा हुआ हूँ, 1 2 तो कोई 1 2 3 4 लिखना भी भूल गए हिंदी देवनागरी, जबकि व्हाट्सएप पर वो फॉन्ट अवेलेबल है।
उपलब्ध है तब भी नहीं लोग लिखते हैं। तो कानून बनाकर अब जनता को मोड़ नहीं सकते हैं। अगर जरा भी उम्मीद है तो इसी रास्ते से उम्मीद है कि हम उनकी अस्मिता को स्वीकार करें, उनका यथासंभव व्यवहार करें और उस व्यवहार को प्रोत्साहन दें। जी वैसे राजेश जी ने संक्षेप में, मुझे शुरू में हो रहा था कि बिहार की गौरवशाली परंपरा से ये बाहर आएंगे या नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो उन्होंने इस बात को काफी सटीक ढंग से रखा है। जी तो जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की गोष्ठी के आयोजन के लिए, और अगर मेरा भविष्य में भी जी हो तो अच्छी बात है। जी धन्यवाद। मेरा भी एक छोटा सा सवाल था, सवाल नहीं, एक तरह से जो इससे उभर करके आया है कि यदि हम लोग पूरे हिंदी पट्टी जिसको बोलते हैं, हिंदी हार्टलैंड, उसमें यदि हम लोग देखें तो करीब करीब 30-35 भाषाएं अ, एक तरह से हैं जो कि नीचे धरातल के नीचे हैं। और सचमुच कितनी है वो तो काउंट करने और पता चलेगा, ये कम से कम 15-20 तो जरूर हैं जो कि जैसे आपने ब्रज भाषा का नाम लिया या मालवी का नाम लिया, मैथिली का, सुरजापुरी का, वगैरह वगैरह। एक डर ये लगता है क्योंकि राष्ट्र की अवधारणा भारत में ऐसे तो कहने के लिए बहुत पुरानी है और ये भारत की अवधारणा है, लेकिन एक बात ये सच्चाई है कि भारत को एक प्रशासनिक तंत्र के अंदर में आए हुए बहुत कम समय हुआ है। और ये डर लगता है सचमुच कि यदि हम लोग ये जो एक हिंज है, एक ये जो कनेक्टर है, यदि ये कमजोर पड़ता है तो बाहरी शक्तियां या हमारे इस तरह की जो फिसिपरस टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, सेंट्री पेटल फोर्सेस जो हैं, केंद्र प्रसारी बल है, वो ज्यादा मजबूत हो सकता है। और हम लोगों ने एक तरह से अपनी मैथिली का, अपने भोजपुरी का बलिदान दिया है इस देश को रखने के लिए। ये बात बहुत सारे लोगों को अंदर खटकती है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने को ये मान के चलते हैं कि ये एक समस्या है और इसको हम लोग तत्काल के लिए एक लार्जर आइडेंटिटी का पार्ट बनते हैं। अब सवाल ये है कि जो आपने एक सजेस्ट किया, इसका और थोड़ा मॉडल डेवलप करने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति का जो त्रिभाषा फॉर्मूला हम लोग कह रहे थे, कि हर एक व्यक्ति के 3 भाषाएं हुए ही, होंगी ही। एक तो वो होगा जो कि वो बोलता है, जिसको कि हम बोली ना कहें, भाषा ही बोले, चाहे वो 2000 हो भारत में, तो एक उसके अधिकार हो, उसके माध्यम से आधिकारिक काम कर सकते हो, चाहे वो एक जिले में हो या एक जिले के हिस्से में हो। फिर दूसरा लेवल हो गया जिसको कनेक्टिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, जो हिंदी है। और तीसरा फिर अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी या फ्रेंच या जो भी आप तो अंग्रेजी ऑलमोस्ट एक तरह से। तो क्या आपको लगता है कि ये जो है वो एक आधिकारिक नीति को फिर से फॉर्मुलेट करने की जरूरत है, या त्रिभाषा फार्मूला का जो एक ये था उसको एक नए शेप में लाने की जरूरत है? देखिए, राजेश जी। त्रिभाषा फॉर्मूला हमेशा से रहा है। उसको कोई पॉलिसी के रूप में लाया गया या लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी समझ में उसकी जरूरत नहीं है। वो अपने आप एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी बोलने वाले लोगों ने अपनी भाषा का बलिदान दिया देश को एक रखने के लिए, मेरी समझ में इसकी जरूरत नहीं है। अभी भी बलिदान न देना चाहिए, ना किसी को मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं कि इस देश को एक रखना जरूरी है। ये देश एक फिर भी रहेगा। इसलिए मैंने आपको विष्णु पुराण की वो कोटेशन दिया, उसका कोई किसी आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है। ये देश एक तब भी देखा जाता था जब हम बहुत पुराने प्री ब्रिटिश पीरियड की बात करें। अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, फिर भी लोगों को जब जरूरत पड़ती थी, पेशवा, शिवाजी, मुगल्स, इन सब की कहानियां हम लोग सुनते हैं। तब भी एक पेनिनसुला था, वो अभी भी रहेगा। अभी भी उसका आपको मैंने मॉडर्न एम्पायर का पिक्चर दिखाया। कैसे मॉडर्न एम्पायर इतनी बड़ी लैंडस्केप में सिर्फ जबरदस्ती से तो शासन नहीं हुआ हो, वही तो बात रही होगी। ऐसा 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 देख करके लगता है कि लोग जबरदस्ती कब्जा करते थे। अब उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन डिसइंटीग्रेशन लैंग्वेज की वजह से नहीं होता। हमारी जिसको जिसको मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिटी कहते हैं, या मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं, वो हमारा बेसिक नेचर है।
जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। आप मॉडर्न हिस्ट्री को देखिए, जिस अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, उसी ने ये भी लिखा है ना, मेरे पास वो नहीं है कि वो तराना ए मिल्ली लिखा हुआ है ना, उन्होंने ही लिखा हुआ है ना। इस डिवीजन के बाद भी हिंदी प्रोफेसर चौधरी महात्मा गांधी की बात कर रहे थे। अब वो सारा बहुत डिफरेंट तरह का डिबेट है कि पाकिस्तान का इंडिया का डिवीजन हुआ क्यों। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बनने के बाद भी इसमें ये जो डिसइंटीग्रेशन की बात होती रहेगी, जो जितना बड़ा होगा वहां उतनी खटपट होती रहेगी। मेरा लार्जर पॉइंट ये है कि भाषाओं और अस्मिता का बलिदान देश को एक रखने के लिए जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इसी को अगर हम उलट कर देखें तो अस्मिता के सम्मान से देश एक रहे। और मेरा जो प्रपोजल है वो जैसे प्रोफेसर डीपी पटनायक के बारे में प्रोफेसर चौधरी ने कहा, या हम सभी लोग जानते हैं, हिंदी लिंक लैंग्वेज के तौर पर होना चाहिए। तो हिंदी ये इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जैसे देखिए आज के समय में ऐसा होता है कि मैंने इसलिए कहा कि इसको मैं सेमी एकेडमिक डिस्कशन बनाना चाहता था। आप देखिए कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर देखिए ये लिखा होता है, एयरपोर्ट पर लिखा होता है, एयरपोर्ट पर शायद अब नहीं है लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है लिखा हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। विवेकानंद की तो बात नहीं होती है, महात्मा गांधी के नाम से आप कुछ भी लिख दीजिए, लोग उस पर डिस्कशन नहीं होता है। मैं लोगों से ये जानना चाहता हूं कि ये कहाँ लिखा है महात्मा गांधी ने कि हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोले जाने वाली भाषा है। आज भी 75 साल बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी नहीं बोली जाती, न कश्मीर में बोली जाती है ठीक से, समझिए हर जगह जाती है, लेकिन न कन्याकुमारी में बोली जाती है और न बीच में कहीं बोली जाती है। आप लाइन खींच करके देखिए, घुमा फिरा करके लाइन खींच करके देखिए, उसमें हिंदी कहीं नहीं आता। लोगों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं। तो महात्मा गांधी के नाम से कुछ कुछ कहना या हिंदी ही देश को एक सूत्र में बांध के रखेगा, ये हमारी पहचान नहीं है। मैंने लास्ट पॉइंट में इसीलिए कहा था कि ये हमारे मल्टीप्लिसिटी हमारी डेमोक्रेसी की पहचान है, और उस पहचान में ये और भी जरूरी है कि लोगों को उसकी आइडेंटिटी से स्ट्रिप ऑफ नहीं किया जाए। अब ये और डिस्कशन का मैटर है कि हिंदी हार्टलैंड का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, लेकिन अगर ऐसे हुआ बेसिक कंस्ट्रक्शन में मगध, मिथिला, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड, एक रिसेंट टाइम में एक प्रपोजल मायावती के गवर्नमेंट के टाइम में दिया गया था कि उत्तर प्रदेश को कई भागों में बांटने की जरूरत है। उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये मेरा लैंग्वेज के दृष्टिकोण से मेरी ये समझ है। थैंक यू। तो अब हम लोग आज की चर्चा को समाप्त करें, कोई प्रमुख सवाल ना हो। धन्यवाद राजेश जी, आपने काफी विस्तार से चीजों को रखा और हम उम्मीद करते हैं कि इस बहस से एक नई बहस निकलेगी और हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और बिहार का उसमें किस तरह का एक नक्शा उभरता है, इस पर भी हम लोग आगे कभी चर्चा रखेंगे या पैनल डिस्कशन रखेंगे तो उसमें हम लोग आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद।